भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके जानदार शानदार मनपसंद पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट मॉडरेटर आशुतोष। मेरे साथ है ओक्लाहोमा से रोशन समीर अन्नम, और लॉर्ड राजानी इज मेकिंग अ कमबैक टुडे, इज विद अस। सो मीत मीत नहीं आया आज। व्हाई इज द डिफरेंट नहीं, राजानी? एक्चुअली नो, मीत इज शिटिंग ब्रिक्स राइट नाउ क्योंकि व्हाई? ओरिगी ने जो 94th मिनट पे गोल मारा है, तो या पूरा जो फैन बेस है वो मीत पे टूट पड़ा है। तो अभी वो बाथरूम में, वो बाहर नहीं आ सकता, उसको बचा के रखना जरूरी है। तो बहुत ही बढ़िया चीज ये हुई है। मतलब जिस तरह से जब जब बेचारा ओरिगी मैच में आता है और मीत व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डालता है कि लिवरपूल प्लेइंग विद 10 men, सो ये मतलब काफी एकदम डिसरेस्पेक्टफुल है। हाँ। तरीके से उसकी कमल कुटाई होनी चाहिए। सो एनीवे, वी आर हैप्पी टू हैव यू कृष्णा हियर। सो ये मैच की शुरुआत हम उल्टे से करेंगे। वर्ड्स ऑन गोल ऑफ ओरिगी। कृष्णा, यू वर देयर एट द स्क्रीनिंग, व्हाट वुड यू लाइक टू से? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये 1.5 साल बाद ही started the screening back. मैं कॉन्ग्रेचुलेट या करना चाहूँगा आप सबको। पोस्ट कोविड अपना पहला स्क्रीनिंग था, एंड आई एक्सपेक्टेड कि थोड़ा स्लोपी में छोड़ सकी थर्ड में, सॉर्ट ऑफ 1-0 विन, बट ओरिगी से या एक्सपेक्टेड नहीं था। आई एक्सपेक्टेड साला और या वान डाइक और थियागो टाइप प्लेयर टू स्कोर, बट ओरिगी ने या हमको याद दिला दिया। he's still here, he's still hungry for goals, he's still our super या sub, and मतलब एक मोमेंट पे भी मेरे को ऐसा नहीं लगा था गोल होने से पहले कि यहाँ ओरिगी मारेगा। बट या उसे मारा। सो मारा तो ठीक बात है। सी एक टाइम, मतलब काफी समय ऐसा हो गया जब से ओरिगी हमारे लिए यही रोल में रह रहा है। और आई मीन, where do you see Origi as one of the super subs in the recent history? I mean, where would you rank him? और the question is for me, right? Yeah. जिसको भी देना हो, जिसको भी आंसर देना। I mean, if we talk about Liverpool, so Liverpool के लिए, Yeah. yes, he has been a super. I don't think in our recent history we have had such a player कि जो bench से आके, not even like to make a difference. I think it is Origi's talent that he has a knack of scoring Yeah. goals and in the most clutch and crucial moments. recent मैं तो 2005-6 तक जा रहा हूँ। मेरे को याद नहीं आ रहा है कि ऐसा इतने जब से मैंने इतने आइकॉनिक, इतने बड़े लेवल पे इतने रेगुलरली किसी ने गोल मारे। मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि ऐसे डाइंग मोमेंट्स में इतने आइकॉनिक से गोल, मतलब जिसने मारे हैं वो बंदे फिर सुपरस्टार्स ही रहे हैं। मगर ऐसा फ्रेंच वाला प्लेयर है बट आके गोल तो बड़े वाला ही मारता है। तो वो मुझे 2005-6 से मैं याद कर रहा हूँ, मुझे नहीं आ रहा याद। समहाउ लिवरपूल के लिए तो नहीं आ रहा। I think हम as fans realize नहीं करते, but I think Klopp realizes that potential in Origi, like हम लोग हमेशा हमेशा कोई भी, I feel like हमेशा ऐसा जब भी मैच होता है जहां हम ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे, हमारी पासिंग ठीक नहीं है, जहां पे हमें थोड़ा डायरेक्टनेस चाहिए in attack, like क्योंकि we did not have the fluidity to pass the ball around and like break down Wolves defense because they hadn't conceded in last 4 games before this, and so I think ऐसे times में Klopp realizes that Origi is the man to go for. And I mean, Yeah. I don't think the good thing about that is we don't expect him to score, so I'm like ठीक है, like we throw that trump card in and see what happens. And so Yeah. in that way I enjoy that, like कोई expectation नहीं है कि like still 0-0 draw is fine, we don't want to lose, but Yeah. we still want a draw out of it. And I mean, like Wolves played well, like generally ऐसे games में team सिर्फ defend करता है और बैठ जाता है. They had a good Yeah. balance of attack and defense, and so like
आई थिंक वो एक फटीग भी आता है, पता है, लाइक जैसे अपन पिछले 3-4 मैचेस ऐसे बड़े बड़े मार्जिन से जीते हैं, एंड सो दैट पॉइंट कम्स, लाइक एक मैच आता ही है जहाँ पे हम लोग जहाँ पे तुमको you have to grind it out and you have to show that you are really hungry, and you can go till the very last minute to fight for those 3 points that you richly deserve. एक और चीज मैं कहूंगा कि नॉर्मली क्या होता है कि कई सारे बार ओरेगी आता है ना, तो ओरेगी इवन इफ स्कोर्स थोड़ा सा रैंडम सा गोल लग गया होता है, बट आज ओरेगी आया तब से अच्छा खेल रहा था, उसने जो भी 20-22 हाँ, मिनट खेला है तो वो प्रॉपर, लाइक 20-22 नहीं, जो जितना भी खेला है वो ऐसा, बट आया तब से ही वाज इन गुड पोजीशंस, ही वाज मेकिंग थिंग्स हैपन. So it's not as if like he's not just getting lucky. I mean, after the euphoria has settled down, after like we are shooting this after 1 hour, so thoda sa euphoria settled down हुआ है, so he was playing good. He was in good positions. So I think I good think signs for Liverpool. the thing is कि Origi is a fast player, like मतलब he has running ability, he can dribble, and outside the box shooting, he has that capability. He's always shown that. So I mean, again, like the reason we got Ox in the game was like we cannot reach the ball near the penalty spot. हम लोग अंदर pass नहीं कर सकते हैं. So the only way we could have salvaged a goal was to hit from outside. Although goal था was, I mean, see, Origi का finish तो ठीक है, but we should also probably acknowledge Van Dijk's passing ability. Absolutely, yeah. I don't think I have seen a center back with such pinpoint accuracy of giving the ball. I think this pass was as good as Van Dijk's pass for Mane against Bayern. इंजीनियरिंग के हिसाब से जो एक्यूरेसी का डेफिनेशन है ना, तो वो लिहाज से आई थिंक वैन डाइक की जो एक्यूरेसी उसके एकदम नजदीक आएगा तो वो है हैरी मैग्वायर. सो ही इज वेरी एक्यूरेट. I mean, he's not accurately doing wrong, what is, but he's pretty accurate at doing that. Like he's doing it again and again and again. So he's right up there with Van Dijk in accuracy. I So, think Harry Maguire but anyway, coming back to our game, and क्योंकि हैरी मैग्वायर इज क्लब कैप्टन, Van Dijk is not. वैन डाइक को भी ये वो नहीं है, तो वी शुडंट कंपेयर. हैरी मैग्वायर इज absolutely. I mean, Van Dijk has managed to go before he can become captain. Yeah. और एक चीज ये गोल डेमोन्स्ट्रेट है कि हमारा रेंज ऑफ like options that we have, अगर हम मिडफील्ड से इंट्रिकेट पास नहीं कर सकते तो our hoop ball is not like just हवा में उड़ा दिया, कोई मिल गया तो मिल गया, like it's a ball, like these defenders can put a ball behind the other back line, and then you have people running behind them, and so we have added that dimension to our game. But again, like it also depends on the person to finish it. But I don't think I was particularly unhappy with the game, like absolutely. See, I mean, देखो, a win is a win is a win, and 3 points are 3 points. So the thing is that कि आखिर में जाके हमको यही moments है जो कई बार season defining होते हैं हमारे लिए. मतलब you don't expect to drop certain points, like especially competitor ने point drop किया है, so it becomes very important. So yeah, I think with for this that reason it was important. 1 point clear. We go 1 point to Chelsea and will be 1 point behind City if they win the game, which they might, as they are leading 2-0. So the thing is, we have to be very clinical in these aspects. You have to, whenever हम जब भी लिवरपूल वाले 2010 से 14-15 में बहुत सुनते थे, you have to win ugly, you have to learn to win in ugly games in an ugly manner. So जब ऐसे wins आते हैं ना, it shows, like it reassures me as a fan personally कि हाँ, वो 4-0 मेरे को somehow वो reassurance ही देता है कि अपन फॉर्म में, like 4-0 के बाद तुम कभी भी स्लंप में चले जाते हो, बट जब तुम्हें ऐसा हंगर आ जाता है, ऐसा तुम ये मोमेंट आता है ना, then you are like हाँ, these people mean business. वो 2019 वाला season was probably the example, lost by 1 point, but there were probably 10 games I can remember which were like 1-0, 2-1, ground out, like and comeback kings बोलते थे हम लोग
अपनी टीम को, क्योंकि we came back from such situation. Yes. कृष्णा Even कुछ in कह रहा है. 1920 जो विला वाला गेम था अपना, जो 87 Yeah. मिनट की रॉबर्टसन ने कमबैक किया और फिर माने ने मारा, उस टाइप का थोड़ा आज था. हाँ. एंड हाँ. these wins are necessary. हाँ. Obviously, मतलब कचरा खेलो पर 3 पॉइंट लेके जाओ. तो Yeah. So at the end of the day, he's that right. really matters. और Yes. ये Yeah. You continue, कृष्णा. हाँ, तो मेरा सुपर कट रहा कप है? की बात हो रही थी, तो अब अपने पास क्या नहीं, अब आवाज ठीक आ रही है. वीडियो बंद किया तो आवाज ठीक आ रही है. हाँ, तो सुपर कप की बात हो रही थी, तो मैं बोल रहा था कि अपने पास तो कोई ऐसा सिटी ऐसा नहीं है कि ग्रिलिश जैसे प्लेयर 100 मिलियन के प्लेयर लाओ. ये रियल मैड्रिड ने जो अपने सामने में बेल आए थे बेंच में से वैसे लाओ. अपने पास जो है वो है मिनामिनो है और ओरिगी. तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट ही इज वेरी गुड सुपर सब. एक टाइम पे हिटर आता था, उससे तो काफी अपग्रेड है 17-18 सालों के प्लेयर के सामने. आई वुड विश कि हम एक टाइम पे ऐसे सुपर सब लाएं जो ये सिटी या मैड्रिड जैसी टीम्स लाती है. ये होने नहीं वाला मुझे पता है, बट फ्रॉम 17-18 या जैसे ही मतलब क्लॉप का रेन है उसमें आई थिंक ओरिगी इज तो मतलब वो फर्स्ट टीम में कभी नहीं चलेगा, पर एज ए सुपर सब he has done some really good like he has given some very good moments. और मुझे ऐसा लगता है कि ओरिगी ने अपना वो रोल एक्सेप्ट कर लिया है. लाइक he knows that he will not get transferred to a club to play first team football, but he knows that if he stays with Liverpool, he can give such performances and win trophies with them. And I think at the end of the day, when you look back at your career, I don't think you will think about मैंने कितने 90-minute matches खेले rather than like मैंने कितने clutch goal मारे जिसकी वजह से मेरी टीम और कितने मैच जिताए. करेक्ट. Right. And But even yes, if I was a player like that, if I was a player, I would want to be the team player. I would want to be the man who could score the goal and just be happy. I don't want first team minutes. मुझे चलेगा. I mean, if I have the reputation in the team that I am this clutch player, 90-minute goal scorer, I mean, I want to enjoy all the moments that I can provide the team, you know. ये क्लच से याद आया, how would you rate Origi as a clutch player in the Premier League? मेरे हिसाब से तो नंबर 1 पे वो है. He's top at the. I think I was thinking about it. Or how does he compare against Chicharito? हाँ, sure. Chicharito, yeah. I think another player of I mean, not in Premier League right now. I would say Olivier Giroud was also a clutch player for Chelsea. Correct. Every time Chelsea needed a person to be in the box because they had good fullbacks, Giroud would come in and like score a nice header or like a nice और finish. अपने सामने तो मारता ही थी. अपने सामने तो हर बार ठोकता ही. Right. So I think in a right sense, again, like ऐसे headspace में होना भी important है for you to realize that you are not a first team player, but you will be called on in such situations and you're happy with that role in your team. I think this shows that, you know, the manager tells the player कि भाई तू first team में तो शायद ना आ पाए, but मुझे तेरी जरूरत है ऐसे moments में. I need you. You are my man. And when you have that assurance, I don't think the player is in a bad mood, you know, like मेरे को first team में 90 minutes नहीं मिल रहे. That's not important at all, you know. I mean, to be honest, तो 90 minutes माने ने क्या किया? जो किया वो ओरिगी ने अपने 20 मिनट में किया, right? So, on a given day, if satisfied बात करें तो I would be satisfied with those 20 minutes. ठीक है, अब माने पे नहीं जाते हैं, but yeah, true. Whatever you said is true. I mean, फुटबॉल एक ऐसी चीज है जहाँ पे प्रोसेस से ज्यादा मतलब कहते हैं ना डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है. वो रास्ते से ज्यादा डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट है. Doesn't matter how you reach. So I have a very bad analogy in mind, but I'll keep it to my own dirty mind.
Coming back to the game, Salah थोड़ा सा मतलब ठीक है, I'll not even say about his form or something, but Salah या एक मतलब Salah की एक तरीके से by his ridiculous standards, he had a bad game and he still gave a fantastic assist. So Salah was there trying things, and Jota ने जो मिस किया वो I don't know, मतलब वो आज मतलब एक तरीके से जादू की झप्पी दे देगा ओरिगी को कि भाई तूने बचा लिया, अदरवाइज वो पूरी रात जागने वाला था करवटें बदल बदल के कि मेरे को ये गोल इस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए था. So I mean words on our front four. I think the crowd got to Jota today. Yeah, possible. I just felt like he had the pressure of, you know, coming back to the place where it made the player that he is right now. And on a given day, all three go. It would have been a hat trick for him. Those two headers and this shot. You know, I don't think it was just an off day for Jota. I think, but again, like I'm just happy that he's in the right positions to get these things done. You know, like that is more important. Missing part of the game, it happens. Like on a good day, like Salah also has missed some easy tap-ins, you know, and I'm just happy that, you know, your team is playing on a philosophy and it is executing what it is supposed to do. Sometimes things go wrong, but that's fine. I think probably out of front four, I would say I was pretty disappointed with Mane for sure, because again, it's a classic Mane game. Ball आता है, वो touch करके 10 किलोमीटर दूर जाता है, फिर वो भागता है, dribble करने का कोशिश करता है, वो ball से आगे चला जाता है. I might have said this like so many times on this podcast right now that my frustrations with Mane is that, you know, I think with Mane is that he does not inspire a game. I like, if I have to be very harsh about it, like ऐसा कचरा गिरा हुआ गेम को अपने हाथ में उठा के अपने टैलेंट के ऊपर से, like he does not have that. He feeds off on the positive things that are happening on the field, but like let's say if all 10 players are just moralless, उनसे कुछ हो नहीं रहा है, तो माने स्पार्क इंस्पायर नहीं करता है, ऐसा मुझे फील होता है. Okay, would you agree with this, Krishna? By nature, Mane is not like that. मतलब title winning team में he was more inspirational than Salah or even VVD or Fabinho. मतलब in that season जो उसने even clutch goals मारे हैं या मतलब out of nowhere he generated those goals. After COVID, it seems that either he is not there physically or mentally, I don't know. Yes, after COVID, inspirational performance उसने नहीं किया है, but I still love him. I think he has still a lot to offer. अब उसमें क्या है कि एक ही टीम में साला और माने दोनों को रखोगे तो माने आउटशाइन हो जाएगा साला से, क्योंकि साला इज the best player on the planet right now. But like I don't want to, even though Mane is not performing to his own level, I don't want to criticize him right now. और छोटा का क्या है, इसे 23 मतलब 23 साल का या 22 साल का है? 23 अब, and striker peaks at 27-28. मतलब we are expecting a lot from Jota right now. ये अब लिंगार्ड नहीं है, ये 27 साल का 28 साल का, जिससे हम ये 23 साल का है, but he has given so many match winning performances so far कि हम एक्सपेक्ट कर चुके हैं कि भाई ये he is one of our spearhead, and जैसा साला करता है वैसा ही just a second. I think my criticism for Mane is not like criticism. It's more like, you know, when you are such an established player. Like, I mean,
I mean, you have seen that what he's capable of, so you expect him to, keep delivering at that level and, It's not be. it's not even delivering. I think like I might say I'm like a little like if I want something from Mane as a player is that like जब कभी भी टीम ऐसा स्ट्रगल कर रहा है तो अपना इंडिविजुअल ब्रिलियंस से मोरल बूस्ट करे is what I want from him, and I think I've not seen it, so I guess that's the only thing. It's not a complaint, it's just probably more than like an expectation that he must meet. Like fan, like I'm a very unreasonable fan, so mera expectation to like 110 I mean, that's a good disclaimer you gave actually. And finally, मतलब after this particular win, जैसे हमने शुरू में बताया कि हम लोग 1 पॉइंट दूर होंगे सिटी से और 1 पॉइंट आगे है चेल्सी से. So और अगला हमारा मैच है आई थिंक एस्टन विला से. So any important thing about that particular match, Aston Villa? A straightforward home game, and I think we should beat them. I mean, I cannot remember any special thing about this particular match. Sorry, sir. क्या हो सकता है? हाँ मतलब जेरार्ड को बैठ के देखना चाहिए वो मैच, फील्ड पे नहीं आना चाहिए. मतलब मेरे हिसाब से ना आज से जेरार्ड को मतलब एकदम हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग अगले 6 दिन के लिए करानी चाहिए एस्टन विला को, कि जैसे अगले मैच में जब भी वेस्टर्न विला के आए तो उनके प्लेयरों के पैर खुल गए कि दौड़ा नहीं जा रहा है, इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करा दी है. आई मीन बीइंग अ लिवरपूल लेजेंड, और जिस तरह से एस्टन विला ने पिछले साल हमको हराया था 7 गोलों से, so I think this is the least Gerrard can do for us. So that's what I am hoping, being an unreasonable fan that I am. बाकी अगले जो स्क्रीनिंग से जो मैचेस में देख रहा था, they are Newcastle, after Aston Villa, Newcastle, Tottenham, Leeds and Leicester. Fairly easy fixtures. I mean, there are no easy fixtures in Premier League, but then you would expect Liverpool to do well. You would expect Liverpool to pick, I don't know, like 14 or 12 points out of these. है ना? And क्योंकि चीज ये है कि once that December और वो festive period शुरू होता है, we might drop points because of our lack of squad depth. And वही एक टाइम है जब सिटी और चेल्सी गियर बदलते हैं, तो आई थिंक we should keep up the pace by not dropping any points. जो तरीके का हंगर आज हमने देखा वही हमको कंटिन्यू करना है. I mean, what would you like to say about these fixtures? First, Roshan, then Krishna. I mean, I echo the same thing with you, Ashu. Like, these are fixtures that Liverpool, with its quality, should be able to put away. कोई as such difficulty नहीं होना चाहिए. But as we all know, there is no easy fixture in Premier League. So, yeah, we just have to keep pace with City and Chelsea. Hopefully Chelsea and City lose some points on the way, and then we capitalize on that weekend. Thankfully, 2 weekends we capitalized, and now we are ahead of Chelsea. And so I think probably a thing for later discussion, but I think Chelsea has rode its luck. I feel Chelsea will see a patch where they'll be struggling to win some games. Let's hope. Injuries and stuff. So it will be a great season. It will be a great season. This time it is not only 2 teams, it's 3 teams who are going to go for the league. And so I'm just happy. I've been enjoying the league irrespective of how Liverpool is playing. So hopefully we get good games. Yeah. So I mean that brings us to the close for this particular discussion, and the only thing, I mean, today I would like to give the closing remarks that football without Origi is nothing. You will never walk alone. Thank you for tuning in to LFC and our podcast. Subscribe, likes, share. You know the drill. Thank you guys. Thank you for watching us. Bye. See you guys. Bye.